हेलो एवरीवन। सो जैसे हमने कहा था कि हमारे पर्सनल फाइनेंस में वुमेंस डे की सीरीज़ पे हम लोग कुछ लेके आने वाले हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट इंटरव्यू। सो आज हमारे साथ है एस्थेटिक इंडिया की फाउंडर एंड आई वुड लव कि शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ बिकॉज दैट विल बी रियल फन। सो वेलकम टू आर इंटरव्यू। या प्लीज़ रुचि गो अहेड। Thank you for having me, Gaurav. Hi, guys. This is Ruchi Roy. I'm founder of Aesthetic India. It's an online store for sustainable products, and the main motto of the store is to empower women, the craftswomen who handcraft our products. I'm also a fashion stylist and a brand consultant. Okay, perfect. Thank you. And you know, आज Women's Day है and she works in the field of empowering women. But let's now have an interview about how she has empowered herself in the field of finance and investing. So I know you are a very busy woman, Ruchi, and it's really a hard time for you on Monday to find time for our interview. Thank you for being here, first of all. So let's jump into the question and answer directly so that we can get the maximum value out of it. So yeah, so tell us something about what do you think about personal finance, hygiene, and investment? What are your views on that? Okay, so being a woman, when I was in my early 20s, I did not feel the importance of saving. Everything that I earned, every penny that I earned was spent. And by the end of the month, I was just waiting for my salary to come when I was working. So it is then that I realized that how important it is to have some savings. And then later, a few years later, I realized that not just savings, but you also need to have investments, and you need to have a very well planned personal finance. So the hygiene part comes here, where you have to plan well where you are investing your money, where you have your, for example, FDs, and what savings you have. Apart from savings, you also need to have other funds for you. For example, your health fund, you need to have an emergency fund. So all of that I got to know very later in life, but I was very lucky that once I realized how the importance of having savings and investments, it literally changed my life. Because when I started my startup in 2020 amid the pandemic, it was from those investment and savings that I could start my startup. So that was one major thing that I have learned, that how important it is to have savings. Okay, and why do you think it is important for other women and all? See, let's take a example of a very lame, in a very layman term that we can say, you never know when you might have an emergency. You might want to, uh, you know, spend some money on your health. You might want to spend some money on your grooming, or you might want to take that trip you always wanted to. So, what's stopping you? The main, one point that I feel, one major factor, obstacle that comes for women is the finance part. You can't always go to the male, members of your family and ask for money. When you have, it brings that independence and freedom in you. So I think independence and freedom is directly related to the money, the investments and savings that a woman has. So you mean to say that if your personal finance hygiene is good, if you are very planned in your finances, that gives you a very good cushion of like freedom, in the sense that okay, although Definitely. we are in patriarchal society to a great extent, but here women can also empower, because this is a series on Women's Day. So we are also appreciating women who have started investing. So that's our main. That's what where it is coming from. एंड यू नो एक अजब टाइप की क्लैरिटी आती है, अजब टाइप का कॉन्फिडेंस आता है इफ़ यू हैव फेल्ट व्हेन यू नो कि ओके आई हैव अ गुड हैबिट ऑफ सेविंग, एंड मोर देन सेविंग आई एम रेडी टू टेक रिस्क इन द मार्केट, एंड Definitely. आई एम मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट. And this is not ki okay, how will I arrange and all. And because I know women are very very good at investment, so women are very very good at investing, and they are also very good in sticking to a habit, not like unlike boys, they Definitely. do it for some time and they then miss out on the other time. So okay, so let's talk about the fundamentals of personal finance hygiene. So for example, there are plenty of it. So for example, to save few, they're like always save 10% of your income, always have an emergency fund, always save for the rainy day, so that कि okay, I have some funds so I can take risk in the market, because you said that you have started a business, and starting a business in itself is a very risky project. So yeah, Right. I would love to know your views about if there are some fundamental principles, and what
will happen if someone implements it or if someone doesn't implement it? See, so as I told you that earlier, like initial days, I felt that one should have savings, and over the time I realized कि सिर्फ savings से नहीं होगा. Savings आप एक बार use कर लोगे वो खत्म हो जाएगा, right? Then you have to save again. Investments, with investments and SIPs and other terms which you can explain better. The fun part here is that, for example, I have investors in my business, but at times I do not want to go to my investors and I want to put in some amount. I do not want to, मैं अपने एफडी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहती हूँ. At that point what I'll do is I have different funds that I have invested and saved in the market or on different platforms, जो मेरे लिए मेरे business की emergency के लिए है. So Okay. on some day the emergency is business. The other fund that I have, which is an emergency fund, is for my health. So any day that I need to go for a, let's say, a health checkup that would cost me up to 5 to 10,000, I do not want to, again go and mess up with my bank account, so I can use that emergency health fund for myself. Now people who have divided and who understand these fundamentals, they have very well, branched out कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है. अगर वो इमरजेंसी नहीं आती है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि वो आपकी बढ़ती जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी और इम्प्रूव हो रही है. बट व्हाट इफ दैट इमरजेंसी कम्स, सो यू नो कि अगर मेरी इमरजेंसी आती है तो मुझे इस जगह से ही वो फंड निकालना है एंड मुझे बाकी किसी फंड को छेड़ने की जरूरत नहीं है. In case some women who only stick to one bank account and they say कि यही savings bank account हमारी savings है, तो you will not be able to decide कि मैं इसमें से कितना परसेंटेज अपनी हेल्थ को दूं, मैं कितना परसेंटेज अपने ट्रैवल को दूं, मैं कितना परसेंटेज अपनी एजुकेशन या एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट को दूं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन फंडामेंटल्स को समझें, हम सही जगह पे इन्वेस्ट करें और सही अमाउंट स्पेंड करें, डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्यूचर में. Okay, thank you very much. And the central idea that I am picking, कि branching बहुत important है even when it's राइट. come to investing और मेकिंग योर इमरजेंसी फंड. सो थोड़ा सा हटके इससे सवाल होगा एक्चुअली इसी के ब्रांच में, कि ये ब्रांचिंग क्या आपने शुरू से चालू करा था या फिर यू यू लेटर इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? बिकॉज फॉर द पीपल हु हैव येट नॉट स्टार्टेड, उन्हें लगेगा कि मेरे पास तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे अपने बच्चों के लिए भी करना है, मुझे अपने इफ़ यू आर स्पिरिचुअल मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए भी करना है. सो देर आर मल्टीपल बास्केट्स दैट यू कैन पुट, and let's suppose someone is starting with 500 rupees or 1000 rupees. So if you divide that into baskets, so that amount will become very small. So what was your approach of filling each of these baskets on your journey? सो अगेन एज आई सेड दैट जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था कि मेरे अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं तो मैं तो किसी भी दिन कुछ भी कर सकती हूँ. बट व्हेन आई वांटेड टू बाय अ न्यू सेल फोन, आई फेल्ट दैट what if I buy a cell phone that's worth 50,000? I'll have nothing left for my travel or my medical emergency or for other things. So that's when I decided ki that, so it started with bank accounts first. I had two different bank accounts. I made a decision that one will be my main bank account जिससे कि मैं अपने नॉर्मल खर्चे करूंगी, एंड द अदर बैंक अकाउंट दैट आई हैव दैट विल solely be for my shopping in the sense if I want to get a new dress or I want to get a new appliance or anything that would cost me. So मुझे पता होता था कि even though मेरे first बैंक अकाउंट पे इतने पैसे हैं कि मैं जा सकती हूँ कहीं घूमने के लिए, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे दूसरे बैंक अकाउंट में विच इज फॉर माई अदर एक्सपेंसेस उतने पैसे हों. एंड देन लेटर, अ फ्यू इयर्स लेटर, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ फ्यू एप्स जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. वहां भी मैंने मल्टीपल अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इन द कैप ऑफ 5,000, 10,000, 20,000, विद द विद द आइडिया कि जब ये 10,000, 15,000 होगा तभी मैं जाके एक ट्रिप लूंगी, बिकॉज Okay. दैट्स व्हेन आई नो कि वो है. इवन इफ आई हैव 15,000 in my primary bank account, I will not go on a trip until and unless वो जो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो 15 ना हो जाए. सो इससे क्या होता है कि आपके पास एक विजन होता है और आपको पता होता है कि जब वो पैसे होंगे तभी आप जाओगे. एंड Okay. वुमेन एज यू मेंशनड आर वेरी गुड विद देयर हैबिट्स. सो अगर हमने सोच लिया है कि हम तभी जाएंगे तो हम तभी जाएंगे.
यस, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग था ये, एंड व्हाट आई एम Yes. गेटिंग इट कि ओके ड्यूरिंग द जर्नी आपको लगा कि ओके आई थिंक दिस शुड आल्सो बी माय बास्केट, तो आपने उसका Yes. बास्केट बनाया, देन यू थॉट कि हे मेरे पास उसका बास्केट नहीं है, लेट मी मेक द बास्केट फॉर दैट, एंड बिकॉज आपको पहले वाले बास्केट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो दैट वाज ऑलरेडी फिल्ड, तो आपने कहा कि ओके बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट, लेट मी fill in some other basket, and now you have many baskets, and many a part of your life is still sorted, but as this is a journey, so I think you are still making up too many baskets and you are aiming for the bigger thing, right? So moving on, सो फॉर एग्जांपल जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की, आपने बताया कि बास्केट आपने बनाया, एंड that's how you have bifurcated everything. So these are like the basic fundamental principles that you have applied to the best of your knowledge, okay? So आपको ये जो पहली बार मोटिवेशन, जो आपने पहला स्टेप लिया, बिकॉज लाइक they never teach these kind of things in the school, you know. They will teach you maths in school and your parents will ask कि maths में नंबर क्यों कम आए हैं, they will say कि ये इंग्लिश में नंबर क्यों कम आए हैं, साइंस में क्यों है, बट they never ask you कि ओके पर्सनल फाइनेंस में नंबर क्यों कम आए हैं, बिकॉज they don't teach you that in school. So possibly आपकी सेल्फ लर्निंग थी that have made you more aware about it, and you have started taking decisions about कि ओके जैसे मेरी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वैसे ही मेरी पर्सनल फाइनेंस हेल्थ भी है, फाइनेंशियल हेल्थ भी है, और मुझे उसका भी ध्यान रखना चाहिए. तो व्हाट मूव्ड यू एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दैट? So I started this way back in college when I used to get scholarships. तो मुझे हर semester एक certain amount scholarship पे मिलती थी, and it was a big amount, and I did not know initially कि उस मैं उसको क्या करूँ. And that's when I started thinking कि अगर मेरे पास 50,000 है, तो मैं क्यों ना उसको 3 parts में divide कर दूँ. One could be savings for future, one could be savings for my family where I could get them things, and one could be where I shop for myself. And over the time I realized I also had a post ऑफिस में अकाउंट, कि जब मैं हर महीने वहां एक सर्टेन अमाउंट विच इज एज लो एज 1500 डाल रही हूँ, तो वो एक साल में इतना ज्यादा हो गया कि आई कुड थिंक अबाउट टेकिंग अ ट्रिप टू गोवा और अ ट्रिप टू मुंबई, सो एंड दिस इज ये बैक वहां से. व्हेन? दिस इज फ्रॉम 2015 तो एक्चुअली. लाइक 8 years बैक आप अवेयर थे एंड यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. I ओके, was या प्लीज doing it, करिए. and I mean, I was not doing it consciously कि मुझे savings करने हैं, but then I realized कि अगर सिर्फ 1500 rupees मैं post office में हर महीने डालती हूँ, तो वो at the end of the year कितना ज़्यादा हो जाता है. It can actually sponsor an entire trip, you know. So वहाँ से motivation मुझे आया कि I should save, because I feel and every woman can relate with it. आप कितना भी सोच लो कि आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे बचा के रखे हैं, आपने बैंक अकाउंट में पैसे बचा के नहीं रखे हैं, वो आपके खर्च हो जाएंगे. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इट at some place where it's actually being saved and where it's growing, not just kept but it's growing. So ओके, सो वन आर्म डिस्टेंस पे रखना है, सो दैट yeah. नॉट वेरी इजीली अप्रोचेबल, बिकॉज इफ़ यू जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आप कहना चाह रहे, इफ़ यू नीड इट यू विल गो अहेड एंड यू विल टेक इट अप, राइट? सो Yeah. टू अवॉइड दैट थिंग यू शुड कीप इट समवेयर जहाँ से आप इजीली निकाल ना पाओ, सो दैट वो इमोशंस ना है. वंस यू बिकम इमोशनलेस विथ योर सेविंग्स और योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू वॉन्ट टू हैव विथ योर पर्सनल फाइनेंस हेल्थ, राइट? एग्जैक्टली, बिकॉज वुमेन हैव द हैबिट ऑफ इम्पल्सिव बाइंग. अगर हम, मतलब दैट्स व्हाई आई सेड, अगर एक वुमेन को लगता है कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो वो सेविंग्स है, वो सेविंग्स नहीं है. आप किसी दिन जाओगे, आप इमोशनल हो जाओगे, आप इम्पल्सिव परचेज करोगे, यू विल जस्ट स्वाइप योर कार्ड और वो सेविंग्स खर्च हो जाएंगे. बट इफ यू हैव इन्वेस्टेड इट एट सम प्लेस, यू विल थिंक ट्वाइस कि अच्छा, ये तो मैंने अपने ट्रिप के लिए इन्वेस्ट किया था, ये तो मैंने अपने फ्यूचर के लिए किया था, ये मैंने नए लैपटॉप के लिए किया था, तो मैं सोच के खरीदूँ. Okay. तो आपके So डेली have वाले you जो हैबिट. automated that also, because there's a feeling between you getting money and then you depositing money somewhere, right? So there's a very good period of time जब आपके हाथ में पैसे होते हैं, and that is the time when you think कि, okay, why not why shouldn't I why should not I order this on Nike, and why shouldn't I order something from Flipkart or Amazon? So how do you fight that feeling, and over a long period of time do you think that वो feeling आपने अपने discipline से control करा है?
See, when it comes to shopping, women do not think so much कि मैं कहाँ से लूँ, कितने का लूँ, क्या लूँ. If we like something, we just go ahead for it. But yes, I would like to say that my discipline and when I was living alone in Delhi and I was managing my own expenses, I realized it's very important to have a monthly budget. So even if I have 25,000 in hand, I know कि मेरी monthly shopping 7,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. So if I am going shopping, I can either shop for 7,000 in one day or on multiple days. But I know कि मुझे 7 को exceed नहीं करना है. It's like your rental. आपको पता है कि आपको 5,000, 10,000 हर महीने रेंट देना ही है. ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा. Yes. तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट डू इट फॉर माय आउटिंग, फॉर माय शॉपिंग, फॉर अदर थिंग्स आल्सो. फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर इन स्कूल और कॉलेज, हमें स्कूल से भी एक एनुअल फंड जैसा जनरेट होता है फॉर आवर मेडिकल हेल्थ कि आपकी अप टू 10,000 मेडिकल कॉलेज कवर करेगी. तो आई थिंक वहाँ से हमें सीखना चाहिए फ्रॉम अ वेरी बेसिक स्कूल एंड कॉलेज कि वो भी हमें एक सर्टेन अमाउंट का कवर दे रही हैं. तो क्यों ना हम खुद को भी वो कवर दें इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी हैव. शॉपिंग हो या खाना हो या ट्रैवल हो. सो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, आई रियलाइज्ड कि ट्रैवलिंग में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, मेरे Okay. बजट के बाहर. तो मैंने फ्लाइट के बदले ट्रेन लेना शुरू कर दिया कि Okay. टू मैनेज दैट. हम्म. तो सो बहुत दिस इज सोच समझ जस्ट के टू करना फंड योर होता है. अदर बास्केट्स, या फिर एक बास्केट ओवर यूज हो रहा था इस वजह से, राइट? सी आई फील कि अगर आप एक ही फॉर एग्जाम्पल आई एम सेविंग फॉर माई ट्रैवल एंड आई ओवर स्पेंड ऑन माई ट्रैवल, देन तो वो पूरा इशू ही अलग हो गया, राइट? कि करेक्ट. मुझे स्पेंड करना है 20 तो मैं 25 नहीं करूंगी. आई विल ट्राई टू मैनेज इन दैट 20 विच इज क्रिएटिंग अ न्यू डिसिप्लिन इन मी, which is So it's creating a more about means it's not about firefighting, but having a conscience belief कि नहीं मेरे पास 25 है, and have a strong belief कि 25 से ज़्यादा means you, this is life is not like credit card. So you can yeah. only spend things that you Yes. have. Even credit card is there, but what I'm saying is कि until unless you understand कि okay this fund is debit card and overdraft की facility नहीं है, so मुझे Exactly. ये करना है, and to keep that money you invest, right, in that sense. Yes. Yes. Okay, perfect, perfect. So, talking to you, it seems like कि okay आप बहुत दिनों से influenced थे, means इस चीज़ से inspired थे, and you had a good habit of savings. So it comes like unemotionally to you. अब कुछ लोगों को emotional itch रहता है कि 5,000 यहाँ डाल रहे हैं and all, because I talk to many people and they say, but this is a very good thing. Thank you very much for your valuable time. So what message do you think is very important at current point for all the women out there who can look up to you? First, I want to wish everyone a very happy Women's Day. And this entire month is our, every day is our. So every day should be celebrated as Women's Day. Men are nothing without us. So you have to believe in that. And also, a lot of women underestimate themselves. So I would want to, request everyone that never underestimate yourself. If there's anything that you want, you just have to take that one step, and you will walk towards your goal and ambition, and you can achieve it. Coming to the financial part, a lot of women are trying to save as much as they can because they have a lot of dreams and they have a lot of aspirations that they want to go ahead in life with. So I feel that जो भी आप स्टेप ले रहे हो, कोई स्टेप छोटा नहीं है. आप बस रुको मत, आप चलते रहो, एंड आई नो आप वहां पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो. Wow, that's a beautiful message. Thank you very much, Ruchi. And I hope our viewers, because I'm very inspired. So I hope our viewers will also be very inspired and they would have got some good takeaways from today's interview. So happy Women's Day to all of you. And please do comment your one of the top learnings from the interview. And like we always says, keep transforming and have fun. Thank you very much, Ruchi, and thank you everyone. Thank you.